हम लोग आते हैं PYQs पे। द टाइटल फादर ऑफ हिस्ट्री राइटली बिलोंग्स टू हेरोडोटस। हेरोडोटस, a Greek historian of the 5th century BC, is universally known as father of history. His monumental work Histories is the first major narrative historical text documenting Greco-Persian wars and offering detailed ethnographic and political observation. Euripides was a tragedian in ancient Greece, known for plays like Medea and the Bacchae. Thucydides, also a Greek historian, more analytical and critical, known for history of Peloponnesian War, sometimes called father of scientific history. Socrates, classical Greek philosopher, credited with laying the groundwork with Western ethics and epistemology, not history. Match the following work with their authors. तो अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा, महाभाष पतंजलि ने, नीरकुट यस्क वर्तिक कात्यायन ने लिखा। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा, 5th to 6th century BC, संस्कृत grammarian. अष्टाध्यायी, this is highly structured and scientific grammar treatise, consisted nearly 4000 sutra, considered the foundation of Sanskrit grammar and even influenced modern linguistics. Mahabhas, written by Patanjali, a 2nd century BC grammarian. This is commentary on Panini's अष्टाध्यायी. महाभास से जो है वो पनिनी के अष्टाध्यायी का कमेंट्री है. एंड कात्यायन वर्तिकास. Patanjali is also associated with योग सूत्र, but they are believed to be authored by different Patanjali. अच्छा, वो अलग पतंजलि ने लिखा, ये महाभास अलग पतंजलि ने लिखा. नीरकुट, authored by Yask. This work is one of the 6 Vedanga and deal with etymology and semantic explanation of difficult Vedic words. Nirkut, Yask ने लिखा. वर्तिक, कात्यायन ने लिखा, who added critical and explanatory notes वर्तिक to Panini Ashtadhyayi. His work was later interpreted by Patanjali. Vartik. Who was the writer of Mudra Rakshas? Vishakha Dutt. Mudra Rakshas is a Sanskrit political drama composed by Vishakha Dutt during the Gupta period. It narrates the story of how Chandragupta Maurya, guided by Kautilya, Chanakya, overthrew Nanda dynasty and established Mauryan rule. Vishakha Dutt. Though written in Gupta era, it reflects the Mauryan period, blending historical narrative with dramatic flair. The play reveals Mauryan diplomacy, espionage and socio-political dynamic. Okay, अश्वघोष, ये मतलब 1st to 2nd century Buddhist poem known for बुद्ध चरित्र and सौंदरानंद. कालिदास, मतलब अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद लिखा. कालिदास, classical Sanskrit dramatist and poet, composed Abhigyan Shakuntalam, Meghadutam. भास, अर्ली संस्कृत ड्रामेटिस्ट, कालिदास से पहले भी हो सकता है. नोन फॉर स्वप्नवस्वदत्तम. हेमचंद्र, जैन स्कॉलर इन 12th century. बल्लाल एंड पद्मगुप्त, मेडिवल राइटर, बट ये मुद्रा राक्षस से रिलेटेड नहीं. विच क्लासिकल वर्क वेयर रिटन ड्यूरिंग गुप्ता एरा? अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस सब गुप्ता एरा में. अमर सिंह चंद्रगुप्त सेकंड के वो थे, मतलब लेक्सिकोग्राफर समझ लीजिए. अमरकोश, ए थ्योसोरस, composed in Sanskrit, highly valued for grammar and vocabulary. Not just on erotics but discusses love, household management and societal law. Composed during early Gupta era. Meghdut by Kalidas, a lyrical poem, used the motif of a cloud messenger. Shows Gupta court culture and literary excellence. Mudra Rakshas, Gupta period composition, recounting earlier Mauryan history. Gupta age, approx 320 to 550 CE, is rightly known as golden age of Sanskrit literature due to flourishing of literature, science, mathematics and the arts.
हु कंपोज्ड 10 कुमार चरित्रम? दांडिन ने लिखा। 10 कुमार चरित्रम इज ए प्रोज रोमन एटीट्यूड ऑफ दांडिन, ए 7th century संस्कृत प्रोज writer poet narrates adventure of 10 princes. 10 कुमार चरित्रम दांडिन provide vivid depiction of contemporary life, politics and society. It is written in Kampu style, mixed prose and verse. Dandin also authored Kavyatas, a treatise of Sanskrit poetry. His work are significantly for understanding classical court life, social stratification and literary aesthetics in post-Gupta times. दांडिन ने 10 कुमार चरित्रम। सूरदास, भक्ति पोएट, नोन फॉर सूर सागर इन ब्रज भाषा। इन्होंने ब्रज भाषा में सूर सागर की रचना की। सूरदास जी ने तुलसीदास, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली इन अवधि। सूर सागर ब्रज भाषा और रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली ये अवधि में है। ठीक है। कालिदास, क्लासिकल पोएट नोन एज अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंश। भैरवी wrote Kirtarjuniyam, Bharvi Kirtarjuniyam in Mahakavi. Kirtarjuniyam. Bilhana authored Vikraman का देव चरित्र, बायोग्राफी ऑफ चालुक्य किंग्स विक्रमादित्य 6. सोमदेव, नोन एज कथा सरित सागर, ए कलेक्शन ऑफ स्टोरीज इन संस्कृत। देखिए हमको क्या करना है यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए। लर्न नेम्स, वर्क्स एंड देयर हिस्टोरिकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्टैंड हाउ दीज वर्क रिफ्लेक्ट सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड वैल्यूज, डेवलप इंटरलिंकिंग बिटवीन लिटरेचर, फिलोसफी, रिलीजन एंड पॉलिटी, remember Gupta period peak of classical Sanskrit, uses it as an anchor to classify authors and works, use flashcard or one-liner maps to recall such factual pairings under pressure in the exams। ठीक है। कुमार संभवम, कालिदास जी ने लिखा। an epic poem was composed by Kalidas, the birth of Kumar Kartikeya, and is one of the greatest Mahakavya in classical Sanskrit literature. Authored by Kalidas, described courtship of Shiva and Parvati and the birth of Kartikeya, the god of war. It blends Puranic myth, classical poetics and philosophical symbolism. बाणभट्ट जी ने 7th century सी में हर्ष चरित्र और कादम्बरी लिखा। बाणभट्ट ने। चंद बरदाई 12th century में पृथ्वीराज रासो लिखा इन्होंने ब्रज भाषा में। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो। हरिसेन, कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, ऑथर द Allahabad pillar inscription in Sanskrit prose and poetry. Which of the following drama was not written by Kalidas? जानकी हरनाम। अच्छा देखिए, मालकवा अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम are universally accepted as Kalidas work. जानकी हरनाम was written by Kumar Das, a poet from Sri Lanka. It deals with episode from Ramayana, especially the abduction of Sita. जानकी हरनम ये मतलब कुमार दास ने लिखा, श्रीलंका से ये थे, श्रीलंका से थे। Which one of the following book is not written by Kalidas? Uttar Ramacharitam is a Sanskrit drama in 7 acts written by Bhavabhut. उत्तर रामचरित्रम भवभूत ने लिखा है। A scholar from Ujjain. It deals with the later life of Ram.
composed his return to Ayodhya, focusing on Sita's exile and final reunion. भवभूति ने लिखा है मेघदूतम, a lyrical poem in voice of Yaksh sending a message via cloud. कुमार संभवम, बर्थ ऑफ कार्तिकेय. ऋतु संभर, 6 इंडियन सीजन्स के बारे में कालिदास जी ने लिखा है. उत्तम चरित्रम भवभूति ने लिखा है. ये मतलब राम जी के मतलब आगे की लाइफ के बारे में बताता है. बाइबल बुक ऑफ नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज नाट्य शास्त्र. मुनि ने लिखा है नाट्य शास्त्र. Attributed to Bharat Muni is an encyclopedic treatise on performing art including music, dance, drama and stagecraft. It is regarded as a functional text of Indian classical and music and theatre. Composed between 200 BC to 200 CE, it includes rag and their emotional effect, ras, rhythmic structure, tal, musical instrument and vocal forms. ठीक है. Sursagar, devotional poetry by Surdas, part of Bhakti literature. Nad, Vinad, not an authoritative classical text. Sufi Nama, mystical poetry linked to Sufi tradition. ठीक है. पननी अष्टाध्यायी, वत्सायन, कामसूत्र, चाणक्य अर्थशास्त्र, कलहाना राजतरंगिणी. पननी अष्टाध्यायी सही है. पननी 5th-6th century linguistic. His अष्टाध्यायी is structural grammar of Sanskrit and the basis of linguistic science. Vatsyayan 3rd-4th century philosopher. Kamasutra discusses relationship, love and ethics. Chanakya Kautilya, advisor of Chandragupta Maurya, author of Arthashastra, a treatise on state craft, economics and military strategy. Kalhana, 12th century Kashmiri historian who wrote Raj Tarangini, the first proper historical chronicle in India focusing on Kashmir king. What is the name of Kalhan's book? Raj Tarangini. Rajat Tarangini. Raj Tarangini. Raja Tarangini. River of means river of kings. River of Kings. Written in Sanskrit, it traces the history of Kashmir from mythical times of the 12th century CE. Kalhan used historical sources, inscriptions and legends, distinguishing his work as the first Indian historical chronicle in the modern sense. ठीक है. अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, नॉट कल्हाना. इंडिका, मेगास्थनीज, पुराण, sacred text dealing with cosmology, genealogy, myths. Authorship traditionally ascribed to the Ved Vyas. Raj Tarangini, written by Kalhan, is associated with of the following: history of Kashmir. Kalhan was a Brahmin and court historian. Raj Tarangini 1148 to 49 CE remains a primary source for understanding dynasty of Kashmir, especially the Karakota dynasty and others. Chandragupta Reign, Mudra Rakshas by Visakha and Arthashastra. Mudra Rakshas. Anthology of lyrics, Nana Krishna Deva Rai, 16th century Vijayanagar ruler, known for Telugu poetry and administration. अष्टाध्यायी पनिनी ने लिखा है. ग्रामर की बुक है ये. अब देखते हैं अष्टाध्यायी रिटन बाय पनिनी. अष्टाध्यायी इज ए ग्रामेटिकल ट्रीटिस कंपोज्ड इन 500 BC consisting of 8 chapters, laying 4000 rules on Sanskrit grammar. It is a linguistic masterpiece that still influences modern computational linguistics and structural linguistics. Ved Vyas, traditional compiler of Ved, author of Mahabharata and Puran. Shukdev, a sage and narrator of Srimad Bhagavatam, son of Vyas. Shukdev, a narrator of Shukdev, son of Vyas. Valmiki, author of Ramayana, considered Adi Kavi, first poet. वाल्मीकि को पहला कवि कहा जाता है. अच्छा देखिए ये अंडरस्टैंड यूपीएससी प्रिपरेशन के क्या करना है. अंडरस्टैंड नॉट जस्ट ऑथर एंड वर्क बट आल्सो एरा, थीम्स एंड इम्पैक्ट.
ऑलवेज लिंक लिटरेचर विथ हिस्ट्री, जैसे मुद्रा राक्षस रिफ्लेक्ट मौर्यन पॉलिटी। हाउ राज रतरंगिनी गिव्स अर्ली हिस्टोरियोग्राफी, कश्मीर का कल्हान ने जो लिखा है। कालिदास कोर्ट पोएट ऑफ विक्रमादित्य, ए हिस्टोरिकल वर्क गौदावाहो like Kalhan Raj Tarangini was written by Vakpati. Gaudawaho, slaying of Gauda king, a Prakrit epic poem written by Vakpati. He was court poem of Yashovarman of Kannauj. गौदवाहो लाइक कल्हान राज तरंगिनी, वाकपति लिखा गया किसके द्वारा? अच्छा, वाकपति ने लिखा गौदवाहो। The poem is written in Maharashtri Prakrit, not Sanskrit, and is partly historical and partly poetic excavation. It described military exploits of Yashovarman, presenting his conquest of Bengal, Gauda। यशोवर्मन ने किस तरीके से बंगाल पे कैप्चर किया, इसके बारे में लिखा गया। संध्या कर्णानंदिन रोट रामचरित्रम, नॉट रिलेटेड टू गौदा और यशोवर्मन। बाण भट्ट कोर्ट पोएट ऑफ यशो हर्षवर्धन रॉट हर्षचरित्र या कादम्बरी। बाण भट्ट कोर्ट पोएम ऑफ हर्षवर्धन। बिल्हाना 11th century संस्कृत पोएट, ऑथर ऑफ विक्रमन का देवचरित्र। भैरवी एंड हर्ष, भैरवी कीर्तरी जूनिया हर्ष नागनंद। भैरवी 6th century CE poet Kirtara Junior is a Mahakavya based on an episode from Mahabharata where Lord Shiv is disguises test Arjun. Kirat Harshvardhan 7th century ruler of composed 3 Sanskrit plays, Ratnavali, Priyadarshika, Naganand. A unique blend of Hindu and Buddhist element. The hero is Jimut Vahan, a bodhisattva figure. भैरवी एंड हर्ष, भैरवी कीर्तर्जुनिया और हर्ष नागनंद। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागनंद। हु रोट द बुक कीर्तर्जुनिया भैरवी? कीर्तर्जुनिया इज ए संस्कृत एपिक पोएम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लासिकल महाकाव्य, combat between Arjun and Shiva, disguised as Krith hunter, disguised as a Krith. Composed 7th century CE, it is known for rich poetic complexity. Bhatti, known for Bhatti Kavya, a grammar oriented poem. Sundrak wrote for Mrichkatikam, the little clay star card, a classical drama. Mrichkatikam. Kalidas, most renowned Sanskrit poet, but not the author of Kirat Junia. Bhairavi थे किरत जुनिया के। संस्कृत विद बेस्ड ऑन महाभारत, वर्क बेस्ड ऑन महाभारत। तो नैषाधिचरित्र बाई श्रीहर्ष, नैषाधिचरित्र based on Nal and Damayanti story from Mahabharata. नैषाधिचरित श्रीहर्ष ने लिखा। कीरत जुनिया by भैरवी as explained above narrates Arjun text by Shiv. शिशुपाल वध by Magh, a 7th century poet by Krishna slaying of Shishupal. Magh ने लिखा who insulted him in Yudhishthir Rajasuya from the Sabha Parv of Mahabharata. Thus Kumar Charit by Dandin. This is not based on it, prose romance that narrates the adventure of 10 princes. Match authors with their fields. Visakhadatt drama, Varamihir astronomy, Charak medicine, Brahmagupta mathematics. Visakhadatt Gupta period dramatist, famous for Mudra Rakshas, which dramatizes the rise of Chandragupta Maurya with help of Chanakya. ये गुप्ता पीरियड में था, लेकिन लिखे थे मौर्यन पीरियड के बारे में। वराह मिहिर, ए 6th century CE स्कॉलर, फेमस फॉर बृहद संहिता, बृहद जातक एंड
पंच सिद्धांतिका, contribution in astronomy and astrology. Charak, 1st to 2nd century CE physician authored Charak Samhita, a fundamental text in Ayurveda. Brahmagupta, 7th century CE mathematician and astronomer, authored Brahma Isputi Siddhant, introduced rules for zero and negative numbers. Brahma Isputi Siddhant. Brahmasphuti Siddhant. Rechecking Scholar Field Association, Charak, Medicine, Brahmagupta, Varamihir, Astrology, Visakhadat, Playwright, वराहमिहिर मतलब बृहद संहिता लिखे हैं, बृहद जातक और पंच सिद्धांतिका. Charak contribution formed the core Ayurvedic diagnostic and treatment theory. Brahmagupta. Charak Samhita is related to which subject? Medicine. Charak Samhita is one of the two fundamental texts of Ayurveda, and other being Sushrut Samhita, which focuses more on surgery. It covers anatomy, physiology, diagnosis and treatment. Concept like dosas, Vat, Pitta, Kapha and Dhatus. Dos and Dhatu. Concept like dos, Vat, Pitta, Kapha and Dhatus. Public health and preventive medicine. Arthashastra by Kautilya. Deal with statecraft and economics. Politics. Not a subject of Samhita. Religion. अच्छा. अब देखिए, कीप क्रॉस लिंकिंग लिटरेचर विथ हिस्टोरिकल पर्सनालिटी लाइक पोएट्स इन रॉयल कोर्ट, जैसे बाणभट्ट, हर्षवर्धन, कल्हाना, कश्मीर. बाणभट्ट हर्षवर्धन के उसमें थे. मेक क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन ऑफ की ऑथर, जैसे पननी 5th सेंचुरी सी, पतंजलि 2nd, मतलब पननी बहुत पहले थे, ग्रामेरियन थे ये. फिर पतंजलि कालिदास 4th to 5th, 2nd BC, कालिदास 4th to 5th सी, गुप्ता में वराहमिहिर 6th सी, बाण भावभूति, कल्हान 12th सी. रिकॉग्नाइज लैंग्वेज एवोल्यूशन, जैसे संस्कृत से प्रकृति अपभ्रंश, ठीक, अर्ली वर्नाकुलर. पाली प्रकृति, देखिए संस्कृत पाली प्रकृति अपभ्रंश हिंदी. चरक संहिता इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस, तो 120 चैप्टर और 8 सेक्शन में डिवाइडेड है. चरक संहिता इज ए फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेद कंपाइल्ड विद आचार्य चरक 1st to 2nd century CE, स्ट्रक्चर्ड इनटू 8 स्थान सेक्शंस. सूत्र, निदान, विमान, विमन, शरीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प, सिद्धि, ठीक, और 120 अध्याय चैप्टर्स में. इट फोकस ऑन इंटरनल मेडिसिन, प्रिवेंटिव केयर एंड सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय वराहमिहिर, ये अमरकोश अमर सिंह द्वारा लिखा गया है. अमर सिंह, ए लेक्सिकोग्राफर, कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड. इट इज संस्कृत थेरोसस एंड डिक्शनरी. अब वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका कंबाइंस 5 एस्ट्रोनॉमिकल स्कूल इंक्लूडिंग ग्रीक इन्फ्लुएंस. बृहद संहिता, encyclopedic text on astrology, astronomy, architecture and meteorology. Brihad Jatak, core text of Hindu predictive astrology. Panch Siddhantika of Varamihir is based on Greek astronomy. Panch Siddhantika represent a synthesis of Indian and Hellenistic Greek astronomical knowledge. Varamihir acknowledges Yamanacharya, Greek scholar, uses method influence Hipparchus and Ptolemy. Is based on Greek. अच्छा, पंच सिद्धांत टीका ऑफ वराहमिहिर इज बेस्ड ऑन ग्रीक एस्ट्रोनॉमी, सही है. पंच सिद्धांतिका रिप्रेजेंट सिंथेसिस ऑफ इंडियन एंड हेलेनिस्टिक ग्रीक एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज. वराहमिहिर एक्नॉलेजेस यवनाचार्य, ग्रीक स्कॉलर्स, यवनाचार्य, एंड यूजेस मेथड इन्फ्लुएंस्ड बाय हिपार्कस एंड पेटोलमी. नीति शास्त्र, an early book of politics, was written by Kamandak. Niti Shastra, Essence of Politics, is a classical Sanskrit treatise on statecraft and diplomacy, war and administration. Kamandak, a follower of Kautilya, composed it around Gupta period or slightly later. It was widely read in Southeast Asia. Niti Shastra influenced policy of Java and Cambodia.
Java and Cambodia. Kautilya wrote Arthashastra, the most comprehensive ancient Indian treatise. Charak Ayurved. तो कमंदक शास्त्र लिखा. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच. सुबंधु कादम्बरी ने नहीं. कादम्बरी जो संस्कृत रोमांटिक नोवेल बाय बाण भट्ट. कादम्बरी को बाण भट्ट ने लिखा है. लेटर completed by his son भूषण भट्ट. सुबंधु रोट वासवादत्त, ए प्रोज रोमांस. कालिदास रघुवंशम सही है. एपिक पॉइंट ट्रेसिंग द डायनेस्टी ऑफ लॉर्ड राम. भास स्वप्न भास दत्तम सही है. ए क्लासिकल प्ले इन्वॉल्विंग पोलिटिकल इंटरजन रोमांस. हर्ष रत्नावली. वन ऑफ द 3 प्लेज बाय हर्षवर्धन. प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली. प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली. मिलिंद पन्हा is a Pali text. Milind Panha. Question: are the King Milind and Pali Buddhist text presenting a dialogue between King Manandar Milind and monk Nagsen. Discusses Buddhist philosophy, ethics and metaphysics through question answer format. संस्कृत ड्रामा नहीं. नागसेन और मिलिंद, किंग मिलिंद के बीच बातचीत है. पाली टेक्स्ट है. मिलिंद पन्हा थ्रोज लाइट ऑन विच इंडो ग्रीक रूलर. मिनिंदर फर्स्ट या मिलिंद रूल पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया 165 to 130 BCE. Converted to Buddhism as recorded in Milind Panha, reflecting Hellenistic Buddhist syncretism. Milind Panha is in the form of a dialogue between King Milind and Buddhist monk Nagsen. The dialogue explores Buddhist ideas of karma, rebirth, soul, or enlightenment. Nagsen is revered as a wise and articulate monk, converting Maninder through rational debate. Nagarjun Madhyamika school founder centuries later. Nagbhat and Kumaril Bhatt associated with Mimamsa and other schools. Milind Panho is in the form of a dialogue between King Milind and which Buddhist son? Nagsen. Used. अच्छा देखिए